So today's session of the class is some of the shortcuts in the thermodynamics. Yesterday we have did some topic ना, उस topic पे थोड़े questions करेंगे with the help of your shortcuts. ठीक है ना? पहले वाला question देखो बेटा. First question is a gas mixture हाँ see the first question. हो रहा है. चल. See the first question बेटा. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon. Okay, at temperature capital T. Okay, neglecting all vibrational modes. Okay, the total internal energy of the system is the total internal energy of system is. This is a question. Try करो आप लोग. First one is 4 times of RT. Second option is 15 times of RT. And third one is 20 times of RT. And fourth option is 11 times of R. Okay. He lived in Kenya. Chalo. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon of temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is how much? इसके लिए डायरेक्टली अपन एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं बेटा. Put internal energy for the mixture of the gases is equals to RT divided by 2 into N1 into F1 plus N2 into your F2 plus जितने रहते उतने. So this will be the formula. Internal energy for the mixture of the gases will be equal to RT divided by 2 into N1 F1 plus N2 F2 plus so on. अब यहाँ पर कितने गैसेस दे रखा है बेटा? गिवन 2 गैसेस. अपने पास कितने गैसेस है? 2 गैसेस है. फर्स्ट गैस कौन सा है बेटा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक और मोनोएटॉमिक? O2. O2 is diatomic. First gas. It is a diatomic. So how many number of moles is given right now for me? N1 is equals to 2 moles. And number of degrees of freedom F1 for the diatomic is right now for me 5. Isn't it? This is your first gas. And what is the second gas? Argon. Argon is what? Monoatomic. Isn't it? So for monoatomic argon, N2 how many number of moles has been given beta? See in the problem. 4 moles of argon. That means N2 is equals to 4. And number of degrees of freedom for the monoatomic gas is right now for me 3. तो आंसर बन गया कि नहीं बन गया? कितने मिनट टाइम लग रहा है? Internal energy of the mixture will be equal to RT divided by 2 into first one is 21 into 5 plus of your 4 into 3. So simplify कर लो. RT
divided by 2 into 2 5 is 10 plus 4 3 is 12. This will be equal to your, this will be equal to 22 RT divided by 2. 2 ones, 2 11s. तो ये कितना बना? 11 times of RT. This is your answer. आई बात समझ में? Am I clear? Yeah. So the answer is how much for me? 11 times of your RT. Shortcut याद रख लो. Internal energy for the mixture of the gases will be equal to how much? RT divided by 2 into your. Okay. चलो समझ में? RT divided by 2 into N1 F1 plus N2 F2 divided by, sorry, N1 F1 plus M2 F2 so on. Clear? चलो और एक क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 1 mole of argon. Okay, at a temperature T. Okay, neglecting all vibrational modes. The internal energy of system is. चलो बोल दो आंसर जल्दी से. गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ कितने गैस मॉलिक्यूल्स है बेटा? 2 है. तो फर्स्ट गैस कौन सी है राइट नाउ फॉर मी? ऑक्सीजन. फर्स्ट गैस इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज डायटोमिक. समझाने के लिए लिख रहा हूं. डायटोमिक. Number of moles is equals to 2. F1 is equals to your how much for me? 5. Right on. Then what is second gas? Second gas is argon. इससे पहले बोले थे. Argon is right now for me monoatomic. For N2 number of monoatomic कितने हैं बेटा? 1 है. And number of degrees of freedom will be equal to 3. Use the formula. Internal energy of the 13 mixture of the gas will be equal to 13 R2 by 2. very good. RT divided by 2 into N1 F1 plus N2 F2. N2 F2. R temperature तो T दे रखा है प्रॉब्लम में. T divided by 2. N1 is 2 into 5 plus 1 into your 3. So that will be equal to RT divided by 10 plus of your 3. And answer will be equal to how much? 13 RT divided by 2. अगर ये पूरा मैं नहीं लिखता तो ऑब्वियसली 13-14 सेकेंड्स में आपको आंसर मिल जाता. मैं लिखने के लिए टाइम लग रहा. अदरवाइज यू कैन डू इट आउट वेरी इजीली ऑन योर ओन इन द शॉर्टेस्ट वे. तो अब ऐसा वाला क्वेश्चन आया तो कर लोगे ना आराम से. चलो और एक क्वेश्चन ट्राई करो इस पे से. क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले तक आप लोग का आंसर होना चाहिए. मान के चलो मेरे पास एक गैस मिक्सचर है. गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles of diatomic gas and 2 moles of monoatomic gas. Okay, at a temperature T. At a temperature capital T. प्रॉब्लम में कुछ भी हो सकता है. T 2T T by 2 कुछ भी हो सकता है. Neglecting all vibrational modes. Neglecting all vibrational modes. The total internal energy. The total 60 internal energy 8 R by 8 of the RT. system is. कितना आ रहा है बेटा? 8 RT. वेरी गुड. आया सभी को? फर्स्ट गैस को सर बेटा डायटोमिक. N1 is equals to 2. F1 is equals to 5. डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं. N2 is equals to also 2. F2 is equals to monoatomic 3. So initial internal energy of the mixture is RT divided by 2 into, this is right now N1 F1 plus N2 F2. अब प्रॉब्लम में भी 2 गैस हो सकते हैं, 3 गैस हो सकते हैं. उसके हिसाब से टेम्परेचर T भी हो सकता है, 2T भी हो सकता है, कुछ भी.
So it is a 2 into 5 plus this one is a 2 into your 3. Clear? This will be equal to how much for me? RT divided by 2 into this is 10 plus ये कितना हो जाएगा 6. So this one is 16 RT divided by 2. Okay na? 2 ones are 2 eights are. So answer is how much for me? 8 times of your RT. Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Sure. Very good. Sure. See the next model. Find the molar specific heat. Find the molar specific heat for the process. For the process, PV to the power of 3 is equals to constant. हाँ, every time it is neglecting vibrational mode बेटा. Vibrational mode अगर ऐड होगा तो we need to add number of degrees of freedom for that one. जनरली वो लेवल का क्वेश्चन अपने को नीट में नहीं पूछता. ठीक है ना? तो इसका आंसर बताइए. Find the molar specific heat for the process PV to the power of 3 is equals to constant. First option is R. Second option is 2R. Third option is 3R. And fourth option is 4R. PV to the power of 3 is constant. Molar specific heat पूछ रहा. So in this condition, P and PV का relation दे रखा है बेटा. तो directly you can use one shortcut formula. C is equals to R into 1 divided by gamma minus 1. That is right now for me. Diabatic constant जो भी रहता ना, that one. Minus 1 by N minus 1. N is nothing but power of volume. Okay. Am I clear? Gamma is equals to adiabatic constant. Adiabatic constant. N is equals to power of volume. Power of volume. And power of pressure must be कितना रहना चाहिए 1 होना भाई कभी भी इसके अंदर. Make sure of that one. Chocolate and sweet. Power of pressure must be 1. ये रूल है बेसिकली. ठीक है. Power of the pressure must be equal to 1. N is your power of volume and gamma is your constant. तो formula constant formula क्या है? C is equals to your R divided by 1 minus gamma minus 1 by N. अब आंसर आ गया आपका. कर लो. टोटो कितना आ रहा है बेटा? C is equals to your R into 1 divided by molar specific heat of the process. Gamma is right now for me what? Adiabatic constant. Power of. What is an adiabatic constant right now for this one? Anyone? What will be the adiabatic constant? कुछ भी नहीं दिया. It is monatomic or diatomic. Then you should always take right now for me. Gamma की वैल्यू कितनी रहेगी? 5/3. Gamma की वैल्यू 5/3 minus 1. This is minus 1 by power of volume is 3 minus 1. So C is equals to your R into this one will be equal to how much for me beta? 3/2 5 minus 2. That is equals to 1/2. So ये कितना हो जाएगा? 3/2 minus 1/2. 3 minus 1 2/2 यानी C वैल्यू विल बी इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा. मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू R. आई बात कॉमन में PV to the power of anything is always right now an adiabatic process. Am I clear?
अगर प्रॉब्लम में पीवी रिलेशन नहीं दिया तो क्या करना है बेटा, पीटी दे रखा है या वीटी दे रखा है तो कल मैंने बताया था फर्स्ट उसको हम लोग पीवी रिलेशन में कन्वर्ट कर लेना है एंड उसको सेम फॉर्मूला लगा के कर लेना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमें क्लियर? चलो। Excuse me, sir. ओके। Excuse me, sir. 1 mole of an ideal gas, an ideal monoatomic gas, monoatomic gas undergoes a process described by the equation। ऐसे वाले क्वेश्चन आप आपको जल्दी से जल्द में कर सकते हैं। पी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कल मैंने इसका जनरल मेथड भी करवाया था। द मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दिस गैस, बताओ कितना होगा? एनीवन? C is equals to R divided by 1 by, what is the gamma for monoatomic gas? मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 5/3। 5/3. It is right now for me 1 divided by your 5/3 minus 1 minus 1 by n। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? पावर ऑफ वॉल्यूम इज 2, 2 minus 1। तो सर वो कितना हो रहा है राइट नाउ? C is equals to, this one is R into, this value will become how much here right now? 3/2 minus this is 1 by 2 minus is right now for me 1। तो कितना आ गया? C is equals to 3/2 minus 1 कितना हो गया? 1/2. 1/2। तो answer will become how much for me? R/2। R/2. This is your answer। आ गई बात समझ में? Yes. Correct. Sir, So whenever you yesterday get you the gave. molar specific heat and the equation is in the form of P and V and the condition is that power of the pressure is given as 1। अगर power of 1 नहीं दिया तो you need to convert that one into 1, यानी like say P to the power of 6 and V to the power of 3 दिया, then you need to transfer the power of the P to the V और power of pressure को आप 1 में लेके आके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है? Am I clear? Yes. Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, yesterday you gave one formula for this polytropic process as F/2 plus 1 हाँ by 1 minus x into R. Can we use that one as well? हाँ, that also we can do this way। Now see, Okay. molar specific heat for the polytrophic process, I did that Yeah, this method was. by the lengthy method trick was there. This process I did right now for this type of questions. Like see, I did here right now. P square to the power of -7. You can use this method also right now. Okay, but it will Okay, be a sir. time consuming process right now. That's it. It is P and T relation. Convert that one into P and V and simplify that one. That's not an issue. What an idea? Okay. Like say here Okay, sir. P into P square is equals to constant. Now here the power, Hmm. the relation is not between P and V. So first you need to convert this one into P. Like say here I can use, I converted PV to the power of 1/3 I got. That means N value will be 1/3, P value will be equal to 1. And simplify Yes. it, will get the answer for that. Yes. Okay, Am I sir. clear? Yes. Okay, sure. Sure. और एक मॉडल देखो, ये भी अच्छा वाला है, जनरली ये पूछते रहता। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट an ideal gas, an ideal gas is found to obey, found to obey an additional law, additional law, P divided by V square is equals to constant. Okay, and the gas is initially at a temperature
एक मिनट, and volume is V. Question is, find the temperature, find the temperature when it expands to a volume 2V. This is your question. Giving you options. This is 80, 10T, 12T and 90. चलो ट्राई करो. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एन आइडियल गैस. आपके जनरल मेथड से करो एक बार. आस्क अजीबो आस्क. During an experiment of an ideal gas, it is found that ideal gas is found to have an additional law P by V square is equals to constant. Okay, तो given क्या क्या है right now for me देखो एक बार. P by V square is equals to your constant. और इनिशियल टेम्परेचर T1 is equals to T है. और इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 is equals to V है. और फाइनल टेम्परेचर T2 कितना है पूछ रहा है. और वॉल्यूम V2 is given right now for me 2V. ओके, ये अपने को निकालना है T2. ना ऐसे वाले कंडीशन में क्या करो, डायरेक्टली यू कैन यूज दिस डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला, अदरवाइज इट विल टेक टाइम. T1 divided by T2 is equals to V1 divided by V2 to the power of n plus 1. This is your shortcut formula. T1 by T2 is equals to V1 divided by V2 to the power of n plus 1, where n is the power of volume beta. N is power of volume. Okay. In law P by V square is equals to constant. तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 2. n की वैल्यू 2. तो T1 T दे रखा है, T2 अपने को निकालना है. V1 V है, V2 इज डबल है, एंड दिस वन इज 2 plus 1. ये भी चले गया, so it is 1 by 2 power 3, isn't it? So that will be equal to 1 by 8. That will be equal to 1 by 8. यानी T2 will be equal to 8 times of your T. This is your answer. आई बात समझ में? Yes. चलो और एक प्रॉब्लम दो मैं. विवाह. चलो अब ये वाला देखो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझो क्वेश्चन क्या दे रखा है. अच्छा है, मान के चलो सेम कंडीशन है, P डिवाइडेड बाई V स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है. ओके, इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू T है, एंड इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल्स टू V है, एंड टेम्परेचर इज राइट नाउ फॉर मी निकालना है अपने को. V2 इज मान के चलो 3V है, और T2 बताओ कितना है. चलो कितनी देर में लगाओगे बताओ. अब ऐसे वाले क्वेश्चन को ज्यादा फिर कन्वर्शन आइडियल गैस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली यू कैन यूज द फॉर्मूला T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाई V2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1. तो T1 की वैल्यू निकाल. 2070. वेरी गुड. T1 T2 की वैल्यू निकालना है अपने को. T2 V1 इज V, दिस वन इज 3V टू द पावर ऑफ, पावर कितना है यहाँ पर 2, 2 plus 1, AV चले गया. So this will be equal to 1 by 3 power 3. That is how much for me? 27. So T2 will be equal to how much for me? 27 times of your T. That is your answer. Am I clear? Any doubt in this one? Done beta? चलो शिरीन ने थोड़ा लेट कर दिया आज. चलो अब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया है बेटा स्मॉल, जो ग्राफ के क्वेश्चंस बनते हैं. अब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है आपको आते ही होंगे, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट से जल्दी जल्दी दो तीन प्रॉब्लम्स करवा दूं. नीट में भी ऑलरेडी पूछा गया हुआ मॉडल से रेगुलरली. ये देखो, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द heat rejected by a system in going through the cyclic process.
going through the cyclic process as shown in figure. ठीक है, first option is minus 29 joules, second option is minus 31.4 joules, third option is minus 21 joules, and fourth one is minus 50 joules. Okay, and this is the graph given for. Okay, this is volume in cc. ग्राफ जरा देखे, एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, प्रेशर इन योर पास्कल. Okay, किलो पास्कल. दिस इज द शेप. सब कुछ दे रखा है, यहाँ पर एक डाटा दे रखा है इस तरह से, फिर इसका एक डाटा यहाँ पर, फिर इससे यहाँ पर एक डाटा, फिर इसका यहाँ पर से एक डाटा. ठीक है, this one is right now for me 100, this one is your 300, and here it is also your 100, and this one is right now for me 300. This is given data. Calculate the heat rejected by the system. एक बात बताओ, right now the process what I am taking right now is in this one pressure and as well as of your volume. कौन सा प्रोसेस है ये, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. ठीक है ना. चलो, वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट ऑल दी ऑप्शंस आर नेगेटिव. तो हीट रिजेक्टेड तो आपको नेगेटिव में आना, इतना तो आपको याद रखना. वर्क डन का फॉर्मूला याद है आपको इसमें? we'll be using the shortcut formula when we have two different volumes of radius. Work done is equals to pi by 4 into v2 minus v1 into p2 minus p1. But famous problem है, area under the curve. Okay, pi by 4 v2 minus v1 into p2 minus p1. Heat rejected is always equals to work done, याद रखना. And heat rejected is nothing but equal to what? Work done. That is the thing we need to remember. So work done का formula कितना बन गया? W is equals to, this is pi by 4 into v2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 300 in cc, यानी 300 into 10 power minus 6 minus this is 100 into 10 power minus 6 initial volume. See the graph. Into p2. p2 is 300 किलो पास्कल है, तो 10 power 3 minus this one is 100 into 10 power 3. This one is also from the graph. So ये कितना बन जाएगा देखो right now for me? W is equals to how much for me? W is equals to how much? कितना आ रहा चेक करो. How much? श्रीमिफा बोलना. 300 into 10 power minus 6 minus 10 power minus 6. That is 200 हो गया ये. This is your pi by 4 into 10 power minus 6 is common. So this is 200 into 10 power minus 6 multiplied by 300 minus this one is again right now for me 200 into 10 power of your 3. Okay, तो कितना हो जाएगा बताओ? 10 pi. 10 pi. So work done will be equal to your 10 times of your pi. So this is your answer. Pi की वैल्यू मालूम है आपको 3.14. Okay, says VP cycle is always right now for me what beta? Clockwise. So work done will be negative, याद रख लेना. Pressure versus volume का ग्राफ नहीं है. This is your volume versus pressure. VP cycle is clockwise. VP cycle is clockwise. So obviously इसका work done कभी भी negative रहेगा. अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, याद रख लेना. सो वर्क डन कितना है इसका? W is equals to minus 31.4 joules. So that is your heat rejected. So Q बोलो या वर्क डन बोलो, it is one and the same, minus 31.4 joules. Am I clear? Am I clear? Yes. चलो, इसका आंसर बोलो रफीक जल्दी से. हाँ साफ होना है बस, ज्यादा कुछ भी नहीं. This is same graph again, but just I'm changing the values.
This is again here volume है, and here again it is your pressure. And the data given here is right now here. एक मिनट. This is here, and this one is here, and this one is here. यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 30 है. This one is in kilopascal. Sorry. This one is in kilopascal and volume is in cc. चलो जल्दी बता. सॉरी लीटर्स में ले लेते हैं. अभी सीसी करें ना अपन. We'll try to take this one in liters. So आप बताओ कितना आ रहा. सेम हीट एनर्जी ऑब्जर्व. ये हो गया साइकिल इस डायरेक्शन. ये कौन सी साइकिल है बेटा. वीपी है एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो वर्क डन ऑलवेज विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी. पॉजिटिव. Positive. हर्ट मी. यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो. वीपी साइकिल is anti-clockwise. So work done will be obviously positive. ये बात याद रखो. Okay. So what is, कितना आंसर. सोच समझ के दो आंसर. One is 10, another one is 30. No calculation mistake. शरीन बोलो बेटा. अभिया. सैफ. सैमसंग किसका नंबर है, किसका है बेटा फोन. 205. सैफ 314 आ रहा. देखो एक बार. क्लास पढ़ा रहा हूँ. 100 पाई आ रहा. मैं आ रहा हूँ, मैं आने के बाद पढ़ लो तुम. 1 लीटर कितना रहता है बेटा. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 milliliters. यानी 10 power 3 milliliters. 1 लीटर. कितना आ रहा बेटा. 10 power 4 पाई आ रहा करते. देखो चलो चेक कर लेते हैं एक बार. W is equals to, what is the answer formula for this one beta. Pi divided by 4 into, this one is V2 minus V1 into your P2 minus of your P1. So it is pi divided by 4 into V2 minus V1, that is 30 minus 10 into, this one is again how much for me. Cubic centimeter only ना. 10 पावर कितना हो जाएगा. लीटर्स में लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा बेटा. 1 लीटर इज इक्वल्स टू योर 10 power 3 मिलीलीटर्स. ये किलो पास्कल में है. कितना लिखोगे. 10 power 3 milliliters into P2 minus P1, 30 minus 10 into kilopascal. This one is 10 power 3. Hurts you. Relax, Azibo. It will not hurt you. 314 liter kilopascal.
हाँ, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.314 जॉल्स। वर्क डन ना? ऐसे सिस्टम में रहना चाहिए। क्लियर? आ गया? चलो, और एक क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू कैन गिव। बाय द टाइम आई कंप्लीट द डायग्राम आप आंसर बोल देना। ये आपका ऐसा ग्राफ है, और ये हो गया इसका सर्किल इस तरह से, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वॉल्यूम इन सीसी, और यहाँ पर ले रहा हूँ प्रेशर इन किलो पास्कल। इसका डाटा दे रखा हूँ, देखो यहाँ पर इस तरह से। दिस वन इज 400, दिस वन इज 600, दिस वन इज 300, दिस वन इज 500। बोल देना वर्क डन। और एरो मार्क्स आर गिवन लाइक दिस। क्लॉकवाइज है, isn't it? वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, तो कितना आ रहा था वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू V2 minus V1 into P2 minus P1. So it is equals to pi by 4 into V2 is 500. 500 minus 300 into 10 power minus 6 into P2 minus P1. 600 minus, this will be equal to 400 into 10 power of your 3. 50 किलो। आंसर जरा सोच समझ के। That is equals to pi by 4. 500 minus 300, that will be equal to how much for me? 200 into 10 power minus 6 into, this will be equal to 200 into 10 power 3. कितना आ रहा? 50। हाउ मच बेटा? 50 पाई जे। वेरी गुड। साइफ इज गिविंग मी द आंसर। कितना? 15 या 31.4। 50। क्लियर? हमें क्लियर? कैविटी